A7 न्यूजमध्ये आपले स्वागत। गोरेगाव येथील सहाय्यक शिक्षिका पदावर असलेल्या कनिजा फातेमा आगा खान ह्या गोरेगाव येथील मौलाना आझाद उर्दू प्राथमिक शाळा येथे कार्यरत आहेत। मागील 2025 मे महिन्यापासून त्यांची पगार अचानक बंद झाल्यामुळे ते अडचणीत आले। याची तक्रार प्राथमिक शिक्षण विभाग हिंगोली यांच्याकडे केली आहे, परंतु कनिजा फातेमा यांना शिक्षण विभागामार्फत कोणतीही माहिती, सूचना किंवा उत्तर देण्यात आले नाही। त्यामुळे दिनांक 15/9/2025 पासून कनिजा फातेमा आगा खान ह्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर उपोषणास बसल्या आहेत। कनिजा फातेमा आगा खान यांनी यावेळी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी असेही सांगितले की जर या उपोषणानंतरही माझ्या तक्रारीची दखल घेतली नाही व मला न्याय मिळाला नाही तर आमरण उपोषणाचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला। माझी पगार बंद झाल्यामुळे माझ्यावर व माझ्या परिवारावर उपासमारीची वेळ आली असून शिक्षण विभागाने या माझ्या प्रकरणाकडे लवकरात लवकर लक्ष देऊन योग्य ती कारवाई करून मला न्याय मिळवून माझी पगार पूर्ववत सुरू करावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले। A7 न्यूजसाठी अनीस अहमद, हिंगोली। मौलाना आज़ाद उर्दू स्कूल की 28 साल से सर्विस करी, अभी तक पेमेंट मिली। मई से 2025 मई से पेमेंट बंद हो गई। यूँ बनता है HM की गलती है, HM बोले तो यूँ की गलती। खाने पीने की सबके लिए BP, शुगर, ससुर की तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत परेशान है। कर्जा होगा हमारे यहाँ पे। नहीं, आप ये पोजीशन को बैठे, अब कब से बैठे? आज से बैठे। आज से बैठे। और आपको तनख्वाह कब से नहीं है? 2025 मई से। 2025 मई से हाँ। तनख्वाह बंद हुई। हाँ। इसकी क्या वजह है? की गलती है, ईओ बोला HM की गलती। हमको मालूम ही नहीं परफेक्ट क्या है। तो ईओ के पास गए होंगे ना, इसका खुलासा करे होंगे ना, फिर क्या है? रिकॉर्डिंग हमारे पास, वो बोले HM की गलती है, HM को लेके आ मेरे पास। HM आ रही है, अब आ रही है।